Good morning, dear students. Today we will learn like and unlike decimals. So, what is like decimals? Well, decimals having the same number of decimal places are called like decimals. That is, decimals having the same number of digits on the right of the decimal point are known as like decimals. Let us understand it with the help of some examples. Example 1, 4.5, 0.6, students, remember, like decimal चेक करने के लिए एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 नंबर्स होने चाहिए, बिकॉज अब एक नंबर से हम ये तो नहीं बता सकते ना कि ये नंबर लाइक है या नहीं, तो उसके लिए हमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की जरूरत है. सो लेट्स राइट सम मोर नंबर्स. 6.2, 10.2. Students, see here, we have given one decimal place. आपको whole numbers को चेक नहीं करना है. whole numbers में चाहे जितने भी नंबर दिए हो या ना दिया हो, आपको यहाँ पर सिर्फ decimal places को ही चेक करना है. और अगर decimal के बाद की number of digit same है, तो इसका मतलब दिया हुआ set of number like decimal है. So here you can see, सभी में decimal के बाद 1 digit ही है, तो इसका मतलब ये सभी क्या है? Like decimals हैं. Take one more example. Suppose here I have taken 4.01, 0.61, 8634.90, 34.68. Students, here we have given 2 decimal places. See, decimal के बाद सभी में 2 नंबर्स दिए हुए हैं. यहाँ पर भी आपको होल नंबर्स को चेक नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को ही चेक करना है, और यहाँ पर सभी में डेसिमल प्लेसेस इक्वल है. सो इट मींस दीज नंबर्स आर like decimals. Now see next, what is unlike decimals? Unlike decimals are the decimals having unequal number of decimal places, means decimal fractions having unequal number of digits on the right side of decimal point is known as unlike decimals. So let us understand it with the help of examples. And suppose here I have taken numbers 2.1, 61.362, 0.6340. Students, here you can see decimal places are not same. See, यहाँ पर 1 decimal place है, and in second number we have 3 decimal places, and in third number we have 4 decimal places. So we can see these numbers are unlike decimals, and in unlike decimals we will check only decimal places. यहाँ पर भी हमें whole number की place को check करने की जरूरत नहीं है, students, but we can convert unlike decimals into like decimals. कैसे? Let's see. Converting unlike decimals to like decimals, we will follow 2 steps. Step 1, find the number with the greatest number of decimal places. Decimal places. Students, unlike decimal को like decimal में convert करने के लिए सबसे पहले हम उस नंबर को चेक करेंगे जिसमें decimal places सबसे ज्यादा दी हो. So here we write the numbers one below the other. So 2.1, then 61.362, and then third number is 0.6340. Now in 2.1 has 1 decimal place. In 61.362 has 3 decimal places, and in 0.6340 has 4 decimal places. So student, here you can see this is the number with the maximum number of decimal places. So in step 2, make the other numbers like decimals by adding zeros. But remember students, putting as many zero to the extreme right of the decimal part of decimal does not change the value of the decimals. कैसे? जैसे suppose कोई number 2 है, 2 is whole number. अब इस 2 के लेफ्ट साइड में हम चाहे जितने भी जीरो लिख दे, फिर भी 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन्स ये 2 ही रहेगा. उसी तरह से डेसिमल नंबर में हम नंबर्स के एक्सट्रीम राइट साइड में चाहे जितने भी जीरो बढ़ा दें, लेकिन इस 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन्स
ये 2/10 है तो ये 2/10 ही रहेगा, और यहाँ पे ये 2 ones है तो ये 1 ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, टू कन्वर्ट दीज नंबर इनटू ए लाइक डेसिमल्स, हम सभी के डेसिमल प्लेसेस को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे 61.362 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसे 4 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक 0 उसके राइट साइड में लिखना पड़ेगा। एंड इन 2.1 आफ्टर डेसिमल वी हैव ओनली 1 प्लेस, तो यहाँ पे इसे 4 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही 3 zeros। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। कन्वर्ट 41.37, 231.751, 82.8, 419, 8.37 into a like decimals। So students, पहले हम इसे 1 by 1 लिख लेंगे, एक के नीचे एक। So 41.37 and then 231.751 and then 82.8। See student, in 419 it has no decimal places and then we have 8.37. So firstly we check which number have maximum number of decimal places. So in first number we have 2 decimal places and in second number we have 1, 2, 3 decimal places। Student, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपको होल नंबर्स को नहीं देखना है, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद की प्लेसेस को ही चेक करना है। And in third number we have 1 decimal place and number 4 we have no decimal place and in fifth number we have 2 decimal places। So here you can see सबसे ज्यादा decimal place वाले डिजिट 3 है, तो इसका मतलब हमें सारे नंबर्स को 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स कन्वर्ट इनटू ए लाइक डेसिमल। सो 41.37 को 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे इसके राइट साइड में, 1 0 एंड 82.8 यहाँ पे हमें 2 0 राइट करने पड़ेंगे राइट साइड में एंड 419 इट हैज नो डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे हम 3 zeros राइट कर देंगे। एट लास्ट 8.37 यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसे 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 0 लिख देंगे इसके राइट साइड। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू ए लाइक डेसिमल। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू ए लाइक डेसिमल्स? बिकॉज फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू ए लाइक डेसिमल्स। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम and your questions are here. So pause your video and please solve it and we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye bye. Take care.